नमस्कार एवरीवन। आज हम आपके सामने आए एक नए सेशन के साथ। मेरे सामने बैठे हैं अरुणा मैम। अरुणा मैम को टोटल 24 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ प्रिंसिपल। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे टीचर्स के लिए और बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक प्रेरणा है। आज ऐसे ही कुछ सवाल मैं अरुणा मैम के साथ करने वाला हूँ। आप लोगों को इनको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप इनमें से कोई भी एक या दो बात फॉलो करते हो, यकीन मानिए आपको बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और मैं अगर बात करता हूँ पेरेंट्स बच्चों की, इनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है आज के इस इंटरव्यू से। मैम कैसे हैं मैम आप? आई एम फर्स्ट क्लास एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। मैम मैं आपको करीबन पिछले 6 सालों से जानता हूँ। मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे एज अ इंटरव्यू देखा, आपको एज अ प्रिंसिपल काम करते देखा हुआ है। और जहाँ भी मैंने आपको देखा, क्योंकि मेरा काम एक फील्ड का वर्क रहा है हमेशा शुरू से। मैं वैदिक मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, जैसे आप जानते हैं, आपके बहुत सारे स्कूल्स के अंदर मैंने वर्कशॉप भी किया। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मैं टीचर से ही मिलता हूँ, आपसे तो मुलाकात होती ही है। तो वहाँ पर जब मैं पता करता हूँ कि अरुणा मैम, तो मतलब एक बहुत पॉजिटिव सा फीडबैक मुझे हमेशा सुनने को मिला। तो मुझे भी आपके साथ कुछ आपकी बातों से बहुत सारी प्रेरणा मिली। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अक्सर, कई बार पेरेंट्स मेरे से मिलने आते हैं, मुझसे पूछते हैं। हालांकि मैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछे जाए तो उससे बेटर जवाब आप मुझे दे पाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस है कि पेरेंट्स कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं आजकल सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, एक स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, इतने ज़्यादा वो इसमें अंदर घुस चुके हैं कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल लेकर पढ़ाई करते हैं। और माँ बाप कहते हैं कि वो जब उनके हाथ में मोबाइल होता है तो रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं। अगर उनके हाथ में मोबाइल छीन लिया जाता है तो रात को 9 बजे सो जाते हैं। ऐसा क्या है उस मोबाइल के अंदर? सी नाउअडेज मोबाइल के बिना तो काम नहीं चलता, राइट? एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट इज obsessed with mobile, even teachers also. Now you cannot take it completely away from them. What we can do is we can guide the students, be away from mobiles during studies. Okay. Now one thing is there, if they say that I have a great control over mobile and social networking site, but if they keep the mobile on the study table and then they start studying, one high and then gone 15 minutes. This happens often because what happens is, hi, तुम कहाँ तक पढ़े हो, कौन से चैप्टर किया, कौन से चैप्टर छूट गया, ये डिस्कशन शुरू होता है. Then it carries on for further. They don't even know like how many hours they had spent on it. I hope this is truth with every student. So if you say them that you completely avoid social networking site, they cannot do that. What can be done is they can schedule it. Now when they are scheduling every day, if they are studying science, maths and English, and every day, every subject, if they are allotting time for 1 hour, half an hour, whatever it is, let them allot time for social networking site also. मैम लेकिन See, why I do tell like this is, if they allot time for that also, even if it is a 30 minutes, the urge to go into the social networking site again and again will actually stop. Yes, exactly. This is what मैं ऐसा भी, मैं जैसे हम भी कभी यूज़ करने बैठते हैं तो कुछ ऐसे रील्स होते हैं कि हम लोग चलते जाते हैं और रुकते ही नहीं है, फिर रुकते नहीं है, ऐसा वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं। As usual, we start with one reel only. We actually start with one. हाँ। Then we continue it and you don't even know that how much इवन time. कई बार हमारे साथ होता है कि रात को सोने से पहले हम थोड़ा सा मोबाइल देख रहे होते हैं, एक रील देख लेते हैं, उसके बाद शायद वो घंटों बार खत बंद होता है। Right. अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें मोबाइल पर ये चीज़ सर्च करनी है, वो चीज़ है, तो वो मोबाइल को मतलब अपने से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वो मोबाइल का अपने पास रखने का मकसद ये मानते हैं कि अगर हमें कोई स्टडी में कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम उसे सर्च कर लेंगे। लेकिन जैसे आपने बोला कि मोबाइल एक डिस्ट्रक्शन का पार्ट है और डेफिनेटली बच्चे उस चीज़ को नेगलेक्ट करके वो दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। तो क्या ये सही है कि बच्चे मोबाइल से अपनी स्टडी में उसे यूज़ में लेते हैं? If you ask my opinion, I will say like at times even teachers need mobile to research and do something. So even the students also will, in case if they come into any doubt, they need mobile to check back and get the data or whatever they want to take it. So you cannot actually completely avoid mobile. You should give them access to it, but definitely there should be a control. Like many parents do not give them mobile throughout 10th standard
saying you are going to appear for board examination. That Exactly. will be a wrong decision. The students actually should have the mobile to use it, but they should know how to use it, when to use it, why to use it. ओके, ठीक है. For that, the parents, the teachers, and the mentors should actually guide them. ओके. अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि आजकल बच्चों को बड़े अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं. वो अपने माँ बाप को भी अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता होता. इवन माँ बाप के मोबाइल का पासवर्ड बच्चों को पता होता है, बट बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड माँ बाप को बिल्कुल नहीं पता होता. बच्चे कभी भी अपने मोबाइल का, अपने माँ का, अपने फादर का फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बट पेरेंट्स ने बच्चों का फ़ोन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा क्यों? Because they have their own friends and they don't want to give explanation to parents, why am I talking to this person? ओके. Like actually they are into searching unwanted things also at times. एग्जैक्टली. And they are having the access to do that. एग्जैक्टली. And they have their own special friends with whom they discuss even their deepest pressures, struggles and everything. And they actually do not want their parents to know about their personal life. So right now they think that I have my own life and I have my personal space. I don't want anybody to, not even the parents to enter, which is wrong, which is actually wrong. I wish the students have an open discussion with the parents to tell what do they personally feel. They share with the parents everything, what do they feel about it, and they get a clear, connection between the parents to be very, open about their own life. ओके मैम. अच्छा, कई बार क्या होता है, एक एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे मेरा मानना है कि दो तरीके से प्रिपरेशन होती है. एक से एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले वाली प्रिपरेशन, और एक होता है कि अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. जैसे इनिशियल वे में हमने एक प्रिपरेशन किया, जो हमारा प्री बोर्ड्स है तब हमने एक प्रिपरेशन किया, और जब हमारा एग्जाम है तो इन प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस होने चाहिए मैम? See, actually anything, you take anything to present something, you need practice and preparation. Even if you take public speaking, it cannot come to you, one day you stand up and say, I can speak nicely. No, they have to do the preparation. And from the beginning of 10th standard, why parents are creating pressures, why teachers are creating pressures? Because students actually do not take this as seriously, and they always think, I have plenty of time, but at certain point of time, they think that I'm running short of time. एग्जैक्टली. So they actually have to take every exam, even if it is a unit test, even if it is a snap test, they have to take it seriously and prepare it. Because if they start the preparation early, the stress will not be there. Why the stress is there? There are too many things to learn and very short period of time to do it. So at that point of time, stress enters their life. अच्छा, एक और चीज़, कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें नोट्स दे दीजिए, हम नोट्स से पढ़ लेंगे. नोट्स मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत शॉर्ट समरी है किसी भी चैप्टर की, बट वो बच्चे बुक्स को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि बुक्स का साइज देख के वो लोग डर जाते हैं कि बुक्स का. तो कैसे उनको ये डिफ्रेंशिएट किए? मतलब मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स तो बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, बुक्स तो ये जरूरी है, मैंडेटरी है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चे आजकल बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, वो हर चीज़ को बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं. तो उसके लिए वो मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, उसके लिए वो यूट्यूब चैनल्स यूज़ करते हैं. तो कितना ये सही है ये? See, actually, if you ask me, notes, how it is going to help them. Notes will help them when they create the notes. Be very clear about it. If you are going to take the notes created by somebody else and going to study, it is not going to be permanent. एग्जैक्टली. You have to create your own notes when you are studying for the first time. Now, why this notes taking will be to be done? Because it is going to help you till the examination. And if you think that in the beginning I will just like that learn and later on I'll prepare the notes, later on you will not get time to prepare the notes. एग्जैक्टली. मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे पूछते हैं कि सर हमें नोट्स दे दीजिए. मैं उनको यही जवाब देता हूँ जैसे मैम ने मुझे बताया, क्योंकि मैं भी खुद करना, लेकिन मैम ने मुझे बताया कि बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी. नोट्स हम आपको दे देते हैं, वो आपकी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन एक्चुअली रियल प्रिपरेशन नहीं है. आप बुक्स पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स
केवल एग्जाम से जस्ट बिफोर, जैसे आपने बताया कि एग्जाम से जस्ट 1 डे बिफोर पढ़ने के लिए होते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरी बुक नहीं पढ़ सकते. It is also not to learn that time. It is to recall. रिकॉल, एग्जैक्टली. तो नोट जस्ट फॉर रिकॉल. नोट से आप स्टडी नहीं कर सकते, नोट से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, नोट से आप क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं निकाल सकते, तो बुक्स पढ़ना पड़ेगा. जो बच्चे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कि हमें इस चैप्टर को तैयार करने के लिए यूट्यूब, तो वो भी एक नोट्स है जो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए हैं. करेक्ट. कुछ बार कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे, जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छा करते हैं, सोशल स्टडी में बहुत अच्छा करते हैं, साइंस में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट मैथ्स में उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है. कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, साइंस में कर रहे होते हैं, इंग्लिश में बहुत, जैसे मेरा परफॉर्मेंस मैथ्स में बहुत अच्छा रहता था और साइंस में बहुत अच्छा रहता था. दैट्स व्हाई आई एम अ मैथ्स टीचर. बट मेरा इंग्लिश का हमेशा प्रॉब्लम रहा है और अभी भी मैं आपसे केवल हिंदी में ही कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ. तो ऐसा, लेकिन मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ. लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहता है? See, sometime, they like the particular subject on their own. Sometimes just because of the teacher, the one who teaches, they are, very good teacher, they are very good mentor, and the students want to follow her. Because of that, they like the subject. Okay. And it happens that way many a times, that when they like the subject, they put in hard work, efforts, and they excel in it. And when they like the teacher of that particular subject, again, they put in a great lot of efforts to impress the teacher. मीन्स आपका कहना मतलब कि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की इंस्पिरेशन बनने के लिए. और बच्चे का जो माइंड सेट होता है एज अ सब्जेक्ट, वो कहता है कि मुझे अब मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे का एक, मतलब टीचर उसके लिए एक इंस्पिरेशन है. ओके. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स को एक बच्चों का इंस्पिरेशन बनने के लिए, अपने आप से एक रोल मॉडल बनने के लिए और भी ज्यादा क्लास में डालना चाहिए. ना केवल सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए और बल्कि उनके इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए. मैं करेक्ट मैम? राइट. ओके, चलिए. अच्छा, एक और चीज होता है, कई बार क्या होता है, टीचर्स की अगर हम बात करें, टीचर्स कोशिश तो करते हैं, कुछ क्लास के अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, ठीक है, और टीचर का, जैसे हर टीचर चाहता है कि वो हर बच्चे के लिए रोल मॉडल रहे. मेरा मानना है हर टीचर चाहता है, मेहनत करता है, लेकिन कई बार टीचर्स के हाथ से वो बच्चे छूट जाते हैं जो क्लास में इनोसेंस फैलाते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए आप टीचर को क्या बोलना चाहेंगे, टीचर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? See, first thing, to become a role model to the students. हमारे घर में कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, और ये केवल टीचर्स की जो इंस्पिरेशन, टीचर जो उनका रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि भाई ठीक है, कि हमें बच्चों के साथ कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चे उसके लिए तैयार है, लेकिन बच्चे इतने शैतान है, वो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहते. उनसे अगर कभी सीरियस बात भी की जाए, उसके बाद भी बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से वो रहते हैं क्लास के अंदर. तो आप उन बच्चों से निपटने के लिए आप टीचर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? See, I have a great experience of being a teacher. Like, I started my career as a nursery school teacher, and then I got promoted to, UKG, first standard, third standard, fifth standard, 7th, 9th, and I have gone through every level of the school. If you ask me what kind of a teacher you were, I was a very disciplined, teacher. Like, I wanted my students to be in a disciplined way, in every manner. But then I found out children do not like those kind of teachers. They have a hatred toward that kind of teacher. Why? Because, like, she is all the time at the back of us. But I have realized that also. Later on, when they get into their life, after, getting into their careers and everything, these students return back to you saying, ma'am, just because of you were that way and training me in such a way, I had become this. I want to share one experience. One child, was very troublesome in the class. For every minute, he'll stand up with something, doubt, and he'll ask a doubt where the students will keep laughing. Exactly. Disturbing the whole class. And I was so totally, pressurized by that child. But still, I did not give up. I was again at the back of him all the time for his handwriting, for his behavior, for his continuously disturbing the class, all those things. But later on, once he connected to me through Facebook, and he was telling me, I have become a merchant navy person, and I just want to come and meet you in my uniform. And he said, I am like this today just because of you.
See, that is actually the written gift of a teacher. Exactly. That is actually the written gift. We cannot get any other gift from a student apart from a child excelling in his life, returning back to you to say, ma'am, I am like this today just because of you. Very good. Thank you so much. ओके मुझे भी जैसे इस बात से एक बड़ा इंसिडेंट याद आ गया। और जब हम हमारा फेयरवेल था क्लास 12 में, हम लोग स्कूलिंग क्लियर किया था, तो हमारी एक टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी, वो कभी हिंदी में बात नहीं करते, तो हमारे को कभी समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब चैप्टर समझ में आ जाता था, लेकिन वो जब कभी नॉर्मल कम्युनिकेशन किया करते थे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता था। तो लास्ट में जब फेयरवेल खत्म हुआ तो हम मैम के पास गए, मैम आप, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आया लेकिन आप हमारी इंस्पिरेशन जरूर थे, क्योंकि हमें कम से कम ये तो लगा कि आप जब हम इंग्लिश बोलते तो हमको ये फेयर था कि हमें ये चीज़ फेस करना तो पड़ेगा। हालांकि अब वो डर निकल गया है, लेकिन फिर भी उनका कमी अभी भी खलता है कि हमें इतना अच्छा इंग्लिश नहीं आता। ठीक है, हम एक अच्छे मैथ्स टीचर हैं, हमारे मैथ्स टीचर भी ऐसे हुआ करते थे कि वो सीधे उठाकर चौक मारते थे हमारे में, तो वो भी एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थे। वो चीज़ें अब याद आती है, उस टाइम थोड़ा हल्का सा इरिटेशन हुआ करता था, क्लास में थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, लेकिन अब वो चीज़ें याद आती है कि नहीं वो इंस्पिरेशन थी, अगर वो नहीं करते तो शायद हम यहाँ तक भी आज तक नहीं पहुँच पाते। ओके मैम, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि एक टीचर का क्या रोल रहना चाहिए उसको एग्जाम के प्रिपेयर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा बिल्कुल नर्वस हो जाता है, कई बार पेरेंट्स फोन करता है हमारे को, पूछता है कि बच्चे का क्या रिपोर्ट है बताइए, क्योंकि वो इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे के नर्वसनेस के चेहरे पर फील करता है। तो टीचर जब वो हमसे पूछता है कि बच्चे का क्या रोल है, क्या कर रहा है बच्चा, कैसे आप उसको और मोटिवेट करेंगे, तो मतलब एक टीचर का क्या रोल लेना चाहिए जब वो एग्जाम के फीवर में आ जाए बच्चा? I feel that 99% of the responsibility to make the children ready for the examination is teachers, on teachers only. And a teacher should not actually threaten the child, तुम ऐसे ही करोगे तुम फेल हो जाओगे, तुम ऐसे मिसबिहेव करोगे तुम्हें 0 नंबर मिलेगा। So ये सब चीज़ें actually ऐसे many comments है teacher unintentionally does inside the class, but then that is going to demoralize a child. Rather, the teacher should actually, for board exam, and not only in board examination, in any examination, the teacher should actually give a very constructive feedback to the children. Like, after examination, if a teacher is going to give a feedback, just saying you did not study well, you did not perform well, you did not get good marks, that is not a good feedback. A teacher should give a constructive feedback in such a way that you have gone wrong this way, you have not put it this way, you should put it diagrammatically presented. Like if the simple mistakes are corrected in the early stages when they do the unit test and half-yearly, quarterly examination, slowly the child will understand where am I making mistake, why am I not getting the good marks. So at that point of time, this will be helpful for the children. Another thing, like they should give a very comprehensive lesson structure for them to study properly, and the teacher should guide them how to go about to prepare for the examination, how to go about with the time management, how to organize their study schedule, how to organize their overall pattern of studying, everything. The teacher can guide them from the beginning of board exams. अच्छा, कई बार बात देखते हैं हम लोग, जैसे एज अ टीचर मैं भी बच्चों को गाइड करता हूँ। मैं कई बार अपने वीडियोस बच्चों को भेजता हूँ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, और मैं रेगुलर वे पे बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन कई बार बच्चे उसको फॉलो अप नहीं करते। तो टीचर कोशिश कर रहा है, जैसे आपने बोला कि टीचर कोशिश कर रहा है, वो चाहता है पूरा गाइड कर रहा है, लेकिन बच्चे फॉलो अप नहीं करना चाहते। तो आप किस तरीके से उनको कनेक्ट करेंगे, टीचर को किस तरीके, ऐसे बच्चों को किससे कनेक्ट करना चाहिए जो फॉलो नहीं, क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चा है तो मेरे हिसाब से केवल 2 ही बच्चा टीचर को फॉलो अप कर रहा है, टीचर अपनी तरह प्रयास कर रहा है, लेकिन वो 8 बच्चों के साथ टीचर को किससे कनेक्ट करना चाहिए। Now you are talking about a teacher doing something for 8 students. Imagine inside a classroom, a teacher is going to represent 40 students, you know. So at that point of time, if you are going to simply give them just like that motivational stories and you just tell them you do this, do that, it will not going to work. Actually, a teacher should understand the class,
she should divide the class into good performer, mediocre student, and low performance. She need to identify them, and she actually need to pick them out to give one-to-one. I know very clearly that there may not be time for a teacher to go for one-to-one. But then the teacher can, inside the classroom, call out that particular student's name and go near the child, and then like a teacher should create a bond with the student so that the children are going to follow them blindfolded. अभी हमने इन बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा किया हुआ है, कुछ मीडियोकर्स को अलग किया हुआ है और आपके कुछ बैचेस को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो वही जो मैम ने बताया वो हम आपके साथ करें, को समझें। आपको जब अलग बिठाया जाता है क्लास में, दूसरी क्लास बना के, तो उसके पीछे एक रीज़न है। You should not feel bad about it that I was not put in the elite group. Why I was put into the low performers group? Why? Because the teacher has identified you have great potential. And the teacher has identified if I put in some efforts into the student will definitely go and perform better. Okay. अच्छा, एक और चीज़ आपने जैसे बताया कि रादर देन मोटिवेशन स्टोरी की उनको एक डिसिप्लिन में लाकर, तो मेरा एक यही क्वेश्चन है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बच्चे कहते हैं हमें मोटिवेट कीजिए, मतलब पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चों को मोटिवेट कीजिए, लेकिन मेरे को लगता है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, क्योंकि केवल मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये दो शब्द को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? See, discipline is something they have to follow, like a particular time to get up, a particular time to fix and study, and a particular way to dress up, particular way to behave inside the class. A teacher is teaching something and somebody is sitting and laughing continuously. That is demoralizing a teacher, right? Demoralizing a teacher, definitely it is. So like there are certain things why teachers are saying move in a line and enter the class asking permission. When you want to go and drink water, ask permission. And properly dress up. Don't dress up for the school or the teacher or the PT teacher. Dress up for yourself. Dress up very well to feel good. When you dress up, you understand one thing, when you are going for a party and you dress up very nicely, that day you are in a very high mood. Why? Because you are clearly knowing it that I have dressed up the best. So your confidence level is so high. And if you are not dressed up properly, when your shoes are not polished, when a PT teacher enters the class, you try to hide your shoes. So that is discipline, actually. Exactly. And motivation is actually like a child when he is of less interest in something, when a teacher promotes the child to become more interested towards that, Exactly. that is going to be motivation. And motivation is like taking bath. You take bath regularly. You need motivation regularly. I will give you a simple tip how to remain motivated. You just write down the moments in which you have been appreciated. Like might be your teacher would have appreciated for you did a wonderful job. Or might be your teacher in the small age would put a star in your notebook. These are all very minute things when you think about this right now. But then when you recall them and see when like I think CBSE had guided you to make your portfolio ready, right? In that you have to collect all those things which you had performed very well, where your teachers have given a very positive, good remarks over it. All those things you collected and keep it. Why? Because when you turn them back and then you get actually motivated when you see where you have done wonderfully well. If I ask the students that which part of your life, school life you remember the most, you will either remember the best moment where a teacher has appreciated you, or you will remember the worst moment where the teacher has punished you. एक्चुअली कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा टाइम पास कर ले, उसके बाद ज़िंदगी सेट है। फिर पेरेंट्स कहते हैं 12th कर ले, फिर ज़िंदगी सेट है, बच्चा 12th भी कर लेता है। फिर पेरेंट्स कहता है बेटा ग्रेजुएशन तो कर ले, फिर तेरी ज़िंदगी सेट है, बच्चा ग्रेजुएशन भी कर लेता है। फिर कहता है पेरेंट्स अपने पैरों पे खड़ा होता है, फिर तेरी ज़िंदगी सेट है, वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाता है बच्चा। फिर कहते हैं बेटा शादी कर ले, तेरी ज़िंदगी सेट है, तो वो शादी के लिए मोटिवेट कर शादी भी कर लेता है बच्चा। फिर कहता है बच्चे कर ले,
तेरी ज़िंदगी पर पक्का सेट है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी चलती रहेगी। वो बेचारा एक बार अपने बच्चे भी कर लेता है, उसके बाद पता है बच्चे होने के बाद किसी की ज़िंदगी सेट नहीं होती, संघर्ष होता है। तो कहने का मतलब कि संघर्ष खत्म नहीं होगा फ्रॉम क्लास नर्सरी टू, जब तक आप जिएंगे तब तक संघर्ष। तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे का संघर्ष केवल 1 साल का है, और वो बच्चों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, उनको लगता है कि सारा संघर्ष बस यही है, उसके बाद संघर्ष है ही नहीं। तो ये कितना सही है? See, almost in every student's case, parental pressure will be there. Because the parents actually want their child to perform the best, not for her own sake, like my child should perform better than my neighbor's son, neighbor's daughter, my relative's son, my relative's daughter. That is the expectation of a parent. I just would like to say that parents normally belong to 99 club. I just would like to share a story also. Once a king was there, he was having all the wealth and people to serve him. Everybody was giving salam to him and everything. But then also the king was not happy at all. And he was on a round to the countryside. So when he visited one of the villages, he saw a farmer. He was just eating one roti and with some onions only. But he was singing song and he was enjoying life. He was so happy with his family. He was, playing with the children. And the king thought, I am having everything better than this farmer. But still, I am not happy. But this farmer is so happy. Now, the king asked the minister, now, why this farmer is so happy or more than happy, more than me? Exactly. Now, the minister says, I will be able to tell you the reason after observing him. But for that, I need 99 gold coins. Okay. Now, the king also said, I want to know the reason. I want to be happy like this person. So, he gave the 99 coin in a pouch and gave it to him. The minister went to the farmer's house at night and kept the bag in front of his house and came off. Now, the farmer early morning got up and saw this 99, the bag, and he counted the coins inside it. There were 99. Now, the worry started. Now, he thinks, why somebody will be giving 99 gold coin? It must have been 100. The other one has gone missing. I want to search it. Now, he started searching around the garden, farm, and everywhere. He tries to find out where this one coin has gone. Now, he could not find it. So, he went, he was very sad that I could not get this 100 coin. I'm getting only 99. And he thinks that now remaining life, I will be studying so hard to get that one coin, earn that one coin, and then put it in the pouch and say, now I have got 100 coins. Now, he has lost his happiness. He had become sad. Now, this is actually the reason for not being happy. He is not satisfied with what he is having with them right Actually, now. ऐसा होता है. The parents actually thought, like when a child goes and says, Mama, I have got 99 marks. The parent asks immediately, where does that 1 mark gone? एक नंबर कहाँ गया? तुमने कहाँ मिस्टेक किया था? ये एक नंबर तुमने छोड़ा कैसे? तो नेक्स्ट टाइम इसको भी आपको लेना पड़ेगा. Now, this is creating more pressure on the students. Why? Because what the student had struggled, worked hard, got something and given to the parent is not satisfied and creating quite a lot of pressure on the students. And this is actually, so now I would like to tell the parents, come out of that 99 club, then you will also be happy and the students will also. मैंने एक्चुअली कई बार देखा है कि एक 95% वाला बच्चा है और एक 80% वाला बच्चा है, तो जो ज़्यादा 80% वाला जो कूल है, 60% वाला बहुत ज़्यादा कूल रहता है, उनका कोई लेने देना किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता. He is my hero in front of you, Rehan Yadav, and he is also getting 85% marks and he is very cool. Now he is in Delhi University. ऑन योर, मतलब अपने ही दम पर बच्चे ने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्लियर किया, बट क्योंकि कूल था. और कई बार ऐसा होता है कि 95, 98 लाने के बाद ही बच्चा एक बड़े एग्जाम को कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सारा ध्यान किस पर रहता है? 95% लाने पे. आप बच्चे का प्रेशर नहीं होगा तो हो सकता है कई बार कूल माइंड से वो एग्जाम दे पाएगा.
कई बार बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आप सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है मैं मानता हूँ कि सुबह जल्दी उठने से जल्दी याद हो जाता है, बोलते हैं कि रात को देर तक पढ़ो सुबह, ये कितना सही है? Actually, every child or every student will have a different pattern of studying. Somebody will be an early bird, gets up early and he can learn very nicely. Somebody will be a late night learner, he will be learning according to that only. So we cannot actually force them on a timetable of a parent to follow it. Rather, the student should find out her own prime time to study and fix schedule according to that and when they... मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात को 2 No, बजे पढ़ not के at आपको all. लर्न नहीं होगा, सुबह Not at 4 बजे उठ के लर्न हो जाएगा. Not at all. It is upon, depending upon the प्राइम टाइम child. ओके परफेक्ट. अच्छा, जैसे कई बार ये भी होता है, मैंने पेरेंट्स से सुना है कि बच्चा 90 लास्ट टाइम मैंने एक और डिस्कस किया था कि सिली मिस्टेक, कुछ पेरेंट्स होते हैं मतलब जो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं. बच्चा अगर कहीं 2-4 मार्क्स कटवा भी देता है तो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मतलब सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते कि बच्चे ने सिली मिस्टेक कर दी नेक्स्ट टाइम उनको सुधार निकले. बल्कि मेरा ये मानना है कि सिली मिस्टेक जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बच्चों को डीमोटिवेट ना हो बच्चा, तो सिली मिस्टेक बच्चा कर देता है. तो उस सिली मिस्टेक से बच्चों को कैसे सीखना चाहिए? That is what I said, constructive feedback. Okay. You need to give the constructive feedback to the child, that appreciate the child and then tell, see, this is what you have missed out. Next time you should be careful about it. Rather than, ये कैसे गया? तुमने कैसे किया ये चीज़? ओके, यानी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस आंसर शीट्स हैं, जो फाइनल एग्जाम से पहले जो उनकी प्रीवियस आंसर शीट्स है उनसे सीखने को ज़्यादा मिलेगा. Right. परफेक्ट. और यही आई थिंक मॉक टेस्ट के अंदर भी हम लोग यही करते हैं कि हम लोग बच्चों को लगातार मॉक टेस्ट लेते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखें कि क्या वो मिस्टेक्स कर रहे हैं. लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो मॉक टेस्ट से दूर भागते हैं और फाइनल उनका अंजाम ये होता है कि वो आखिरी में उनका अपना फाइनल एग्जाम खराब कर लेते हैं. तो मॉक टेस्ट हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? In the beginning of the session only I said, anything you get into, you need to practice it, prepare it, and well prepared, less stress, and you perform also wonderfully well. And less preparation, definitely less confidence, and your performance is poor. The mock tests are there just for you to complete the examination within the time. Because when you don't practice according to that, then you will be knowing everything. I used to, I just want to tell you something. My daughter, second daughter, she has got 95 in English and 97 in BST. Now 95 in English, she has appeared for 95 marks and she has missed out 5 mark question just because of less time. The same thing happened with BST also. 3 marks question she left and she got 97. So how much she should have prepared it to complete the examination within the stipulated time. That will be possible only you appear for mock test. At the same time, I will link here this constructive feedback of the teachers. When you do the mock test, the teacher's feedback, that is constructive feedback, will help you where you have done the mistake and rectify the mistake also. Great, ma'am. So mock tests are mandatory, I would say. Okay. Thank you, मैम. आपसे आज बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली. आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों को मैम से सीखने को मिला होगा. बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और आगे भी हम आपके साथ बहुत सारे जुड़े रहेंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करते रहेंगे. बहुत सारे आप हमारे मार्गदर्शन करते रहे. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It's all my pleasure. I have an opportunity to address the students and I'm so happy that I could come here and give my time to you. Thank you. It's all my pleasure.